जय श्री कृष्ण मित्रों। अत्यारे बजार में जांबुड़ा मळवा लाग्या छे तो आज हूँ आप सौनी माटे जांबू शॉर्ट्सनी रेसिपी लईने आवी छूं। आ जांबू शॉर्ट्स पीवामां खूब ज टेस्टी लागे छे तो तमे आ रेसिपी घरे एकवार जरूरथी ट्राय करजो। एना माटे 250 ग्राम जांबुड़ाने आ रीते ठळिया काढीने आ रीते कटका करीने मैं 1 कलाक माटे फ्रीजर में राखी दीधा हता। आ रीते फ्रीजर में 1 कलाक राखशो तो तमारा जांबू शॉर्ट्सनो कलर खूब ज सरस आवशे। अने हवे आपणे जांबू शॉर्ट्स बनावવાની तैयारी करी लईए। तो एना माटे आपणे एक मिक्सर जार लई लईशुं। तो सौथी पहेला आपणे एमां जे जांबू शॉर्ट्स माटे जांबू तैयार कर्या छे ए उमेरी दईशुं। तो अहींया मैं 1 कप जेटला लीधा छे, तमारे जेटલું बनावવું એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। હવે અહીંયા તમારા જાંબુ જેટલા ખાટા કે ગળ્યા હોય એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ એડજસ્ટ કરીને ઉમેરી દેવાની છે। અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલી લઈ લીધી છે। ત્યારબાદ 10 થી 12 ફુદીનાના પાન ઉમેરી દઈશું। આનાથી આપણા શોર્ટ્સનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે ત્યારબાદ 1 નાની ચમચી જેટલું સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈશું। તમે આની જગ્યાએ મીઠાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ થોડા બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને ઠંડુ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું। હવે આને આપણે મિક્સર જારમાં સરસ રીતે પીસી લઈશું। તો અહીંયા આપણા જાંબુ શોર્ટ્સ રેડી થઈ ગયો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ કલર આવી ગયો છે। જાંબુને ફ્રીઝરમાં 1 કલાક માટે રાખવાથી આ રીતનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। तो हवे आपणे शॉर्ट्स ग्लास बनावी लईए। तो एना माटे मैं आ रीतना शॉर्ट ग्लास लई लीधा छे। तो एने आपणे किनारीए फरते લીંબુ लगावीने उपरथी आपणे संचळ लगावी दईशुं। तो आ रीते देखाव पण सरस लागशे अने पीती वखते खाटो मीठो टेस्ट पण सरस लागशे। तो आ रीते किनारीए લીંબુ लगावीने आपणे संचळ आ रीते किनारी पर लगावी दईशुं। तो 3 ग्लासने आ रीते तैयार करी लईशुं अने उपरथी आपणे जांबू शॉर्ट्स उमेरी दईशुं अने ग्लासने भरी लईशुं। तो एकदम टेस्टी आपणो आ जांबू शॉर्ट्स बनीने तैयार थई गया छे। उपरथी आपणे फुदीनाना पानथी गार्निश करी लईशुं। तो देखाव पण खूब ज सरस लागे छे अने पीवामां तो खूब ज टेस्टी बने छे। तमे आनुं शरबत पण बनावीने तैयार करी शको छो अने फ्रीजरमां अठवाडिया माटे स्टोर पण करी शको छो। तो आपणा एकदम टेस्टी एवा जांबू शॉर्ट्स बनीने तैयार थई गया छे। विडियो तमने केवो लाग्यो कमेंटमां जणाववानुं भूलता नहीं अने आवा ज नवा विडियो जोवा माटे चेनलने सब्सक्राइब करजो।